शानदार वीडियो और आपका आज की वीडियो में स्वागत और है। आज जो वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है अघोरीज द डार्क साइड ऑफ स्पिरिचुअलिटी फीचर्स किरण द रणवीर शो एपिसोड 45। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो का चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर को फॉलो कर इनकी चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉग चैनल का लिंक लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। Hillary, the gentleman who climbed Mount Everest, he undertook a journey from the Gangotri, from the start of Ganga right up to Calcutta in a speedboat, in a large speedboat. So when it reached Banaras, they told me the story. I didn't witness this. There was one of these Aghoris who said, "This is nothing. I mean, these boats have no power." So they said, "What do you mean?" He said, "I can stop it with my erection." Okay. So he sat on the bank and the boat was in the water and they tied a rope to the boat and they tied it to his erection. Imagine that he is holding that erection for that long. Wow. And they started the boat and he held it for at least 3-4 minutes. Wow. Oh my! Like, and the boat was trying to go. Go in the and other he was direction. holding it back. It's going to be a slightly dark, very learned, very wise episode of the Ranveer show with the personal Yoda of my life in many ways, Mr. Kiran Khalap. So, you're a mentor to me. Nice meeting you again. Yes, as always, sir. You're a huge mentor to me. I'm kind of bored about talking about careers on this podcast. So, decided we need to change things up and just stimulate our minds. If you're a skeptic, switch this podcast off. Go watch our other episodes. Go listen to the other episodes, because this time we're talking to one of the most well-read humans that I've come across in my life. Kiran Khalap is a legend of the world of branding and advertising in India. But we're not going to talk about all that. We will be talking about the darker experiences of your life. We will be talking about the darker books that you've read. You also spent a lot of time in Banaras when you were Yes. young. Yes. So I'm dead sure you have some crazy stories from back then as well. So in this podcast, sir, we're going to aim to stimulate our audience's mind. Thank you for being on the Ranveer show, firstly. Thank you for getting me here again. My first question to you is about Aghora, like how people call it Aghoris, the Aghori culture. So for a complete rookie, for a complete noob, could you explain what Aghora is? Right. So I think one of the things we should begin by saying to ourselves is that if you're born in India, you have an enormous opportunity, because as a civilization we are very old, as a nation we are very young, right? But as a civilization we are very old, and therefore you have millions of ways of experiencing realities beyond the normal. Millions of ways. So the normal way we know is yoga. And yoga, they say that it is Ashtanga, which means it has 8 limbs. Yam, Niyam, Sadhana, Samadhi, all of those are limbs of yoga. So not only do you have to practice the yogasana, which is the physical part of it, you have to practice control and all of that. The whole lifestyle has to be about it. So it is that Ashtanga part, which means it has eight things that must be in place. So that is called the right hand of God. Then the left hand of God is called Aghora. Aghora is like the short, sharp, quick way. And yoga is this long-winded way. But yoga is safer. This, if it goes wrong, if Aghora goes wrong, you could end up dead or you could end up as a mad person. And I read a lot about Aghora in English. There would be millions of books in Hindi and Sanskrit and all of that, which I haven't read. But the books that have made Aghora accessible in English is a gentleman called Robert Swoboda. So he's written Aghora 1, Aghora 2, Aghora 3, which has mind-blowing stories. So he came to India and studied Ayurveda, and from there he got attracted, or perhaps he always got attracted to Aghora. And he found a guru called Vimalananda. And then you have all these stories about time travel, traveling into other people's bodies, and
all of the mystical powers that Aghoris can have. So I want to rewind a little bit. You said right hand of God, left hand of God, and these are paths. But Yes. what is at the end of the path? End of the path is liberation. And both get you to that same end. Absolutely. That this is just two paths. There could be many more. Okay, got it. Got it? So, for instance, there is a path, a panth or a sect called a Nath Panth. Okay, and the guru at the top of it is Datta Guru, and you have Machindranath, Gorakhnath, all of that. These are all practitioners of Kundalini Yoga. Okay. So Kundalini Yoga, the belief is that there is a serpent coiled thrice at the base of your spine. Like a pool of energy. It's the female energy. Then when you practice Kundalini Yoga, she rises through the 6 chakras that you have, and when it merges with the top chakra, which where the male and female meet, then you have enlightenment or liberation. Got it. So anyone who's got enlightenment has actually risen their kundalini inside. That is if you believe in that notion of that path. Okay. So I lived with J. Krishnamurti for 4 years, walked with him, had lunch with him, and he won't mention any of this, right? Because his entire thing was, if you are aware, if you are fully aware, you are maddeningly aware, you will be free of the entire habit of thinking and conditioning and all of that. So which is why I'm saying the most interesting part of our civilization is that you could be encountering hundreds of paths, Got it. all tried, tested, worked upon, experimented with. So paths to liberation. Paths to liberation. And what happens at liberation? At liberation, so one idea of liberation is to do with rebirth. Okay. That you are no longer reborn. This eternal cycle of being reborn, etc., etc. And suffering. And suffering. The other idea is of, if you do not believe in rebirth or anything like that, that you are free of everything that causes suffering to mankind. You are free of anger, you are free of fear, you are free of Anxiety. any negative emotions. And you become what is called as a sthita prajna. Okay. The person who has total equanimity. Whose sthita prajna means he whose prajna, the mind, is completely steady irrespective of what happens outside. चीजें affect me. And do you also get what they call siddhis or superpowers? Yes, there are meant to be 8 siddhis. Okay. You can become very heavy, very light, therefore can walk, you can fly, there are 8 famous siddhis. So I think Hanuman had the 8 siddhis. So for the listeners who don't know, siddhis are basically, there's no real translation for it in English, but it means that when you're on the path of yoga, of evolution, these are like kind of powers that you can actually get if you are very serious about your path. Yes. But if you really look at the person who is realized, all of them are going to say, don't pursue that. Yeah. Because that will actually shorten your path. Because you'll get hypnotized by having that siddhi. Okay, you'll get drunk in the power. You're drunk in that power, and therefore you're lost the rest of the path. Got it. So again, if you want to learn how to actually begin your meditation session, again, don't listen to this podcast because it's going to be dark. It's not an instructional podcast. We've covered those topics with Dr. Radhakrishnan Pillai. This is about the stories that you've heard. I want to come back to talking about AGHORIS, sir. So my knowledge about AGHORIS is that I've seen it on Ripley's Believe It or Not on AXN, where they basically consume half-burnt human flesh. So you'll find a whole community of AGHORIS in Banaras, and one of their rituals is where they have to eat human meat. So are you familiar with this whole thing? Yeah, it's just one ritual, so there are many. Okay. So what is the idea there? The idea there is you will go beyond your notion of what is good or what is bad by doing things which are completely outside human society. You are also meant to have sex with a young girl who died
and who's been buried. Like necrophilia. Necrophilia. No, it's necrophilia, yes. So these are things meant to push you beyond the idea of good, bad, ugly, not ugly, this is right, this is wrong. That's the whole, which is why it's called the short path, which it just throws you into the deep end of these experiences, and then you come out at the other side completely rid of all these normal notions of good, bad, ugly, beautiful, all of that. What is your opinion on the concept of ghosts, or from everything that you've read? There is a simple classification in our philosophy. There is a classification called Devgan, Manushyagan and Rakshasgan. Okay. So if you belong to Rakshasgan, you have a greater tendency to experience the occult. Hold on. So gun is like a personality trait, I'm guessing. Yes, Okay. Your genetic disposition. genetic disposition. The person who is born with the Devgan is unlikely to ever encounter any occult experiences. Okay. And the person with Manushyagan is likely to have both, little bit of both. Beautiful. But coming back to ghosts, so what is your What take are on the it? things? I think because I'm in Banaras is the, it is the center of all Occult? these things. Yeah. Why do you say the center of occult? There is also, let's say, some amount of it in Bengal, some amount of it in Assam. But the Aghora Mutt, the epicenter is in Banaras. Is Aghora also the same thing as Kala Jadoo? You can mistake it for that, Okay. because Kala Jadoo would be practiced by somebody who has got those powers through some method. But Aghora in its purest form is not about doing tricks or harming human beings. Yeah. It is not about harming human beings or Got it. earning money by doing miracles. Got It is actually a genuine path to enlightenment. So Aghoris have no intention of like haunting you in your dreams or haunting you in person. And making money, no. But what about, have you seen this movie called Phoonk by Ram Gopal Verma? That was centered around black magic, Kala Jadoo. Black magic. Are you familiar with Tantra and all this, like Tantric? Yeah. What is a Tantric? Oh, so there are three words like Tantra, Mantra and Yantra. Okay. Yantra is a tool, Okay. Tantra is the technique, and Mantra is the utterance that you have. So if you have learned those Tantras, the tools, then you become a Tantric. So in Banaras, for instance, I was there in 79. So I think 77 or 78, Hillary, the gentleman who climbed Mount Everest, he undertook a journey from the Gangotri, from the start of Ganga right up to Calcutta in a speedboat, in a large speedboat. So when it reached Banaras, they told me the story. I didn't witness this. There was one of these Aghoris who said, "This is nothing. I mean, these boats have no power." So they said, "What do you mean?" He said, "I can stop it with my erection." Okay. So he sat on the bank, and the boat was in the water, and they tied a rope to the boat, and they tied it to his erection. Imagine that he's holding that erection for that long. Wow. And they started the boat, and he held it for at least 3-4 minutes. Wow. Oh my, like, and the boat was trying to go. Go, in the and other he was direction. holding it back. So, because you're so deep into spirituality, you also end up meeting a lot of these godmen or like gurus. So, I think godmen has now got a negative connotation in the modern day. But there are people who are very advanced on the yogic path who genuinely deserve the respect, who don't do the shady shit that the general youth expects from godmen. So, do you have any stories about? So, beautiful question. Because I have had the privilege of meeting a gentleman called Gudoni Maharaj. Okay. My father tried to get Diksha, long distance grace. Gurus give you grace. By giving grace, meaning they facilitate your journey on that path. They help you advance. Yes. Okay. So on a particular
day, which is Guru Purnima day. And my father sat facing a particular direction, having bathed, having something, and he was to get grace from Guruni Maharaj. The amazing thing was nothing happened to him, but my sister, who was just 8 or 9, she went into a totally different zone. Like what She started doing yoga asanas which she had never done. Her voice changed and all of that. So like voice became heavy. yeah. Wow. So it was, to my mom and me, it was a bit scary. But then we came to understand what that whole thing was. And we went and took her to him in Pune, and he explained that obviously she is born with this Okay. Kundalini excitation. So, but she'll have to decide what to do with it, because it is a dangerous path Okay. But your sister pursued spirituality? to some extent. But to some extent it was natural. So she had to consciously curtail it. Okay. And then she met a guru several years later, and therefore her path was simpler. Kiran Khalap, sir. Thank you. This was a beautiful episode. I hope you had Thank fun. you very much. Thank you for having me again. Could you just give some quick book recommendations for people? One who want to get deeper into the occult world, and the others who want to get deeper maybe into the right-handed, clean meditation. Yoga, path. yes. So, Svoboda, of course. Aghora 1, Aghora 2, Aghora 3. Yeah. That is Svoboda. My current favorite on the right-hand side in mindfulness is a book called Mindfulness in Plain English by Bhante Gunaratne. Okay. Absolutely beautifully written. I mean, every page has a quotable quote, and the simplest, non-technical, no jargon language about what is this whole notion of Vipassana. Okay. Cool. I've gifted it to God knows how many youngsters. Beautiful. Again, so thank you for being on the Ranveer Thank show. you. Until next time, probably the next time we'll do a conversation on business and branding because this is a 360-degree mind. So, from Kiran sir and Ranveer. Thank See you, later. Ranveer. All the best. Thank you, sir. Bye. समटाइम्स आप जब स्पिरिचुअलिटी के इस तरह के किस्से सुनते हैं ना, कहानियाँ सुनते हैं, तो लिटरली आप शॉक होते हैं, क्योंकि हम अगर बात करें, हमने जो है ना कभी वो कहते हैं ना सुपर पावर्स कह लें या ऐसी पावर्स जो आपके सराउंडिंग में होते हैं वो कभी फील नहीं की, लेकिन जब कभी हमें फील होती है ना तो इसमें भी कोई शक नहीं, हम एकदम सहम ज़रूर जाते हैं। और मौजूद ने जहाँ से बात स्टार्ट की है, एक्चुअली मैं इसके बारे में डिस्कस ही करना चाह रही थी कि लाइक ऐसा होता है क्योंकि हम लोग, मैं कहूँगी कि बहुत ही अनकॉन्शियस लोग होते हैं, सो कभी ना तवज्जो नहीं देते अपनी लाइफ में इन चीज़ों पर, एनर्जी की स्पेशली अगर हम लोग बात करें। लेकिन जब चीज़ें थोड़ी थोड़ी आपको समझ में आती हैं और उसके बाद आप सुनते हो, देखते हो, तो आप हाँ बिल्कुल सहमते हो, और समटाइम्स आप काफ़ी स्केयर्ड भी फील करते हो, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मैं कुछ बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखती हूँ और मैं सोचती हूँ तो मुझे लिटरली रात को डर लगता है, लाइक कुछ ना कुछ मेरे मन में ऐसा आ जाता है, हाँ आ जाता है। तो अभी जैसे आज के वीडियो की बात करें, किरण सर ने बहुत अच्छे तरीके से इलेबोरेट किया और बहुत ही मैं कहूँगी कि इंटरेस्टिंग तरीके से उन्होंने बताया कि अगर जैसे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड को लेकर जो दो पाथ्स उन्होंने बताए, सो अगर योगा की हम लोग बात करें, मुझे लगता है कि योगा आपकी लाइफ में इसी तरह से, जैसे हम कहते हैं ना, हम स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, यानी कि आप अपनी लाइफ का जब उसको पार्ट बना लेते हो, आपको अपनी लाइफ में एक ठहराव भी नज़र आता है। ऑन द अदर साइड अगर हम अघोरीज की बात करें, हम लोगों ने ज़्यादातर इंडियन वीडियोस में ही देखा है, जैसे बीच में बनारस का भी जिक्र किया गया कि अगर हम गढ़ की बात करें, जो अघोरी हैं उनके गढ़ की बात, तो वो बनारस ही है, मतलब असम में भी आपको देखने को मिलता है, लेकिन ज़्यादा बनारस में ही है। अब इससे पहले हम लोगों ने एक और वीडियो देखी थी जो कि सदगुरु की वीडियो थी, और आई थिंक वो भी बनारस में ही बनाई गई थी, इफ़ यू रिमेंबर मौजूद। तो वो जब बोर्ड पर इंटरव्यू जो है वो सदगुरु से लिया गया था और उनसे भी अघोरी के बारे में पूछा गया था। और बेसिकली जैसे हमारे जैसे लोग हैं जिनको इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होता, जब वो देखते हैं अघोरी को देखते हैं तो वो थोड़ा डरते भी हैं कि लाइक क्योंकि आपको पता ही नहीं होता उनके बारे में। लेकिन सदगुरु ने भी यही बोला था कि मतलब जो अघोरी हैं वो उनके लिए जैसे एक इंसान के लिए सही और गलत होता है, जो कि एक सोसाइटी ने अपने रूल्स बनाए होते हैं, उनके लिए ऐसा कुछ नहीं होता, और लोग मोस्टली उनको एक गलत तरीके से उनके बारे में सोचते हैं, जबकि वो किसी के लिए
नुकसान नहीं पहुंचाते। उनका एक अपना अलग से एक मतलब रास्ता होता है, और उसमें ऐसा नहीं होता कि जैसे सोसाइटी एक दूसरे को हम सोचते हैं कि दुनिया के लिए ये सही है और हमारे लिए ये गलत है, और इस तरह से उनके लिए ये चीज़ नहीं होती। और इसीलिए जैसे बीच में जिक्र भी किया गया कि वो जो गोश्त हैं, लाइक इंसानों का गोश्त वो भी खाते हैं। सो मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल में तो ऑनेस्टली अघोरीज के बारे में नहीं पता, और ना ही मुझे इतनी समझ है कि वो इस तरह से क्यों करते हैं या उनकी पावर्स किस लिए होती हैं। लेकिन ये ज़रूर उन्होंने बोला कि ये एक शॉर्ट पास ज़रूर है वो पावर्स को गेन करने का। लेकिन जो है ना लिटरली जब आप इस तरह देखते हैं ना चीज़ों को, तो आपको थोड़ा बहुत जो है ना होता है, एक दिल में जो डर होता है ना वो फील होता है। जहाँ तक आपने बात की ना, तो मेरा ख्याल है कि सोसाइटी में हम जो चीज़ें जो है ना एक लंबे अरसे से लेकर चलते रहे ना, खासतौर पर किसी के हम वो अटायर को लेकर, वो बहुत लंबे अरसे तक जो है ना वो फिर चलती रहती हैं। वो तब ही ख़त्म होती हैं जब लोग उसके बारे में जो है बोलना शुरू करते हैं। अभी जैसे बीच में एक बोट वाला किस्सा जो है वो अघोरी के साथ जो है सुनाया गया, तो मैं भाई इन चीज़ों को जो है ना मानता हूँ कि लोगों के पास इस तरह की पावर्स होती हैं कि वो चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि मैं अगर अपने आज से कोई 14-15 साल पहले की बात करूँ ना, तो मुझे किसी ने किस्सा सुनाया था कि कोई थे एक इंसान इस तरह के थे जो कि अगर कहीं नहीं जाना चाहते थे तो वो क्या नाम लेते हैं, गाड़ी पे बैठ भी जाए ना तो गाड़ी नहीं थी चलती, अगर उतर जाए तो चलती थी, बैठ जाते थे नहीं थी चलती। तो नो डाउट बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पर भी जो चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं भी इस चीज़ पर बिलीव करती हूँ। हमारे फादर जो हैं वो एक ऐसा किस्सा सुनाया करते हैं कि लाइक गांव में जब वो रहते थे वहाँ पर एक ऐसे इंसान थे जिनके पास हायर पावर्स थी, और इनफैक्ट वो ऐसे उनके पास पावर्स थी कि एक जगह पर अगर वो बैठे हैं और एक दूसरे गांव जो एक गांव से काफ़ी दूर है, तो वो अपनी प्रेजेंस वहाँ पर भी शो कर दिया करते थे। ये नहीं मुझे पता। हाँ, ये अब्बू ने बताया। आई डोंट नो ये कैसे चीज़ें होती हैं, कैसे इतनी, मे बी फिर वही बात है कि जब आपको सिद्धि प्राप्त हो जाती है, सो उसके बाद ये चीज़ें जो हैं आपको मतलब आप वो पावर्स जो हैं उसको आप होल्ड कर लेते हो। बट मुझे ऐसा लगता है कि नो डाउट इंडिया में आपको जितनी ये चीज़ें देखने को मिलती ना, एक डिटेल नॉलेज आपको देखने को मिलती है। जैसे किरण सर ने बोला कि एज अ नेशन वी आर वेरी यंग, बट जो हमारी सिविलाइजेशन है वो बहुत पुरानी है। सो मुझे लगता है कि वो जो लेयर्स है, आप जैसे जैसे उनको पढ़ते जाते हो आपके सामने, हाँ बिल्कुल नई परतें आती जाती हैं। एंड पीपल लाइक अस जो कि बहुत जल्दी स्केयर हो जाते हैं। सो मुझे लगता है कि शायद मैं अगर अपने आप को देखूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना योगा वाले टाइप के लोग जो होते हैं ना, उनका मतलब थोड़ा सा स्लो, आपकी वो जो है अट्रैक्शन उस साइड पर, हाँ मतलब एक अट्रैक्शन भी, और थोड़ा मतलब जो मेरे माइंड में जो चीज़ें चलती हैं उसके लिहाज से अगर मैं बात करूं, क्योंकि मुझे जो डार्क साइड है ना, मुझे उससे थोड़ा डर लगता है। यार देखें, जो डार्क साइड होती है ना उसे पीछा छुड़ाना भी जो है वो आसान नहीं होता। हाँ, बहुत लाइक या तो आप पागल हो जाते हैं या मर जाते हैं। बहुत सारे ड्रामे अगर बात करें जो टीवी सीरियल्स हैं पाकिस्तान में, इस चीज़ पर भी जो है वो बने हुए हैं। तो आप जब उनकी एंडिंग तक पहुँचते हैं ना उन सीरियल्स की, तो आपको यही दिखाया जाता है कि जो डार्क वाली साइड पर लोग जाते हैं ना, उनका एंड अच्छा नहीं होता। इनफैक्ट बीच में तंत्र की बात हुई, और मैंने ना रणवीर का ही एक पॉडकास्ट देखा था, और उसमें ये मतलब काले जादू को लेकर बात की थी, और उसमें ये बात उन्होंने बताई थी कि अगर आप मतलब जैसे काला जादू करते हो, उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, कुछ इतनी अनहाइजीनिक चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। फिर उसके बाद आपको जब तक आप अपना वो क्या बोलते हैं नॉलेज डिलीवर नहीं करेंगे, किसी और को पास नहीं करेंगे, और वो ये भी नहीं कि आप किसी को खुद पकड़ के लाएंगे, कोई अपनी मर्जी से अपनी आएगा, इच्छा से, बिल्कुल, तो आप उसको जो है वो नॉलेज जो है वो पास ऑन करोगे, फिर जाकर आपको मुक्ति मिलेगी, वरना आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। इससे रिलेटेड भी मुझे एक किस्सा जो है ना वो याद है। मैं बहुत देर पहले एक इंसान से मिला था, तो उससे ऐसी बातें हो रही थी। तो उसके पास एक बंदा उससे मिलने आया था, तो उसने यानी कि उसने ब्लैक मैजिक कहीं सीखा हुआ था किसी के सिर्फ प्यार के लिए, कि वो उसको अपने अट्रैक्ट कर ले, लेकिन वो नहीं हुई क्योंकि किस्मत को वो मंजूर नहीं था। लेकिन हाँ, वो बंदा जो है ना आगे से ऐसा बंदा ढूंढ रहा था जो अपनी मर्जी से जो है ना
उस चीज़ को जो है ना सीखना चाहे ताकि वो उसे डिलीवर करके अपनी जान जो है छुड़ा सके। अच्छा, बीच में जो किरण सर ने अपनी सिस्टर के बारे में बात की वो चीज़ मुझे इतनी समझ में नहीं हाँ, आई। वो क्योंकि वो जो है ना कुछ इस कुंडलिनी योगा के बारे में जब हाँ, उन्होंने बात की लाइक उसको लेकर, तो मुझे वो इतना समझ में नहीं आया। वो ज़रूर प्लीज़ एक्सप्लेन कर दीजिएगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं बहुत अच्छे से समझते हैं चीज़ों को। तो कमेंट सेक्शन में वो ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।